Sir, there are documents after documents after documents that clearly establish the ownership of that land was always with the Hindus, except when Aurangzeb ordered the demolition of a temple and the construction of a mosque. Response, sir. Bilal Khan. Okay. Vishnu, those who say Places of Worship Act says nothing after 1947, and I'll just reconnect with Subhrashtra in just a moment. Places of Worship Act 1947, after that, 1991, after 1947, the nature of a place should not change. How does the Places of Worship Act actually work in favor of the Hindus in this place? When was the mosque actually constructed in this location? See, our categorical case is that mosque in this place has been constructed after the illegal compromise on 12th October 1968. There was no mosque before 12th October 1968, and that's why I highlighted the trust deed of 1950. Point number one. Point number two, which is very, very important, is in 1875, 10 rounds of litigation had happened between the encroachers as well as the Mandir committee without any mosque. They wanted to usurp the land, so there was litigation. They wanted to usurp the land, there was litigation. 10 rounds of litigation in 1875. The Hindus won. In 1920, there was litigation between Hindus. That also the Hindus won. In 1935, there was litigation between Hindus and the local Muslims there. That also Hindus won. The title document, the transfer of title in 1944 was also challenged by Muslims. That also the Hindus won. And when everything was won by us, a fake compromise was entered on 12th October 1968, and they said that now we will construct a mosque over this particular land. Let me tell you, Gaurav, Places of Worship Act is attracted in our favor in this case because after 15th August 1947, the characteristic has been changed. This entire 13.37 acres of land is having characteristics of a Hindu temple. This entire 13.37 acres of land is very, very pious to us. It finds mentioned in Gar Sahita. It finds mentioned in various Purans. And let me tell you with a lot of sense of authority, I want to tell on your channel, let there be a GPR survey. You will find the Karagar of Kans there itself. That's the original Bhumi. Subhrashtra and Vishnu. That's the original place. That's a very important point that's being made. But before, I want both of you to respond to what AIMIM Member of Parliament and a very well-respected barrister, Asaduddin Owaisi, what's he saying? He's actually criticized the Allahabad High Court order to allow the survey of the Shahi Idgah complex in Mathura. He spoke exclusively to India Today's Milan Sharma. Listen in. आज सबसे बड़ा मुद्दा है जो मथुरा में सर्वे, जिसकी परमिशन अब मिल चुकी है कोर्ट से। आपने इस पर ट्वीट करके कहा है कि इतनी जल्दी क्या थी, 9 जनवरी को हियरिंग भी थी। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अफसोस इस बात का है कि जब पार्लियामेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसमें बाबरी मस्जिद को उससे एक्सक्लूड किया गया था, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती थी। खैर, वो गलती हो गई। उसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप होंगे, उनका नेचर, उनका कोई तब्दीली नहीं होगी। अब हम बाबरी मस्जिद की जजमेंट के बाद से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया था, जिस अप्रीहेंशन का मैंने इजहार किया था कि अब हर मसले खुल जाएंगे आस्था के मामले के ऊपर, वो सही साबित हो रहा है। आप देख लीजिए कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला खुल गया और वहाँ पर एएसआई को जिम्मेदारी दी गई जाकर चेक करने के लिए। मथुरा की जो मस्जिद का मामला है, ये तो मामला था ही नहीं। ये तो दोनों पार्टीज ने, जिसमें शाही ईदगाह ट्रस्ट ने यूपी वक्फ बोर्ड से परमिशन लेकर और श्री कृष्ण जन्मस्थानम सेवा संघ ने बैठकर एग्रीमेंट कर लिया, एक डिस्प्यूट को उन्होंने सेटल कर लिया। अब सेटल डिस्प्यूट को आप एक इशू बना रहे हैं अभी। But is this issue being made only now, or
are some being economical with the truth? Because in court, all facts will emerge. And Shubhrashtra, when Asaduddin Owaisi says, when the Sri Janmabhoomi verdict came, there was an apprehension that this will open a Pandora's box, or at least for two other sites, Mathura and Kashi. He says my apprehensions are being proven right. So why is Asaduddin Owaisi so perturbed by his quote-unquote premonition? He should know that these three places, Kashi, Mathura and Ayodhya, have a special place in every Hindu's heart. Like, and I don't want to make a parallel, like there are places of worship for Muslims, then they're very emotional about it. It has been a long-standing demand of the Hindus that let's have these three places of worship free from all kinds of constructions that have happened in the recent past. And when I mention recent past, I mention in terms of historical time frame. Why is Asaduddin Owaisi so perturbed by this? It's only, he's a barrister. I'm sure he has also studied history. He knows this land more than as much as all of us do, if not more. So I don't understand where is this perturbation coming from. So let me take that to Bilal Khan. I think we have that link again with him. Bilal Khan, Shubhrashtra raises a very valid point or an important point. She says it's Ayodhya, Mathura and Kashi, sacred to Hindus, Sri Ram, Sri Krishna and Bhagwan Shiv, not significant for Muslims. Why not amicably settle this? जितना इमोशंस इनके लिए हैं वो हमारे लिए भी है, सेम टू सेम. क्वेश्चन ये है विष्णु जैन साहब से, मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली ये है, जब ये एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, डिसाइडेड था, उसको आप लोग बार बार जाके फिर उसमें सर्वे का, जैसे ज्ञान वापी को आप लोग अगेंस्ट वही सब सर्वे, एसआई सर्वे एंड अगेन इसमें ये सब, तो हमें तो मालूम है आपकी राजनीति, हम इस पे नहीं जाएंगे. हमें तो कोर्ट का जो नजरिया है, कोर्ट से जो भी आएगा उसको माना है. कि जब हमने ज्ञान वापी पे भी माना, जब राम मंदिर और जब बाबरी मस्जिद का मामला था उसमें डायरेक्टली कहा गया था इसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जहां जहां नेचर कैरेक्टर होगा वहां कोई चेंजेस होंगे. लेकिन अब फिर दोबारा से मथुरा को लेकर आगे काशी मथुरा, तो ये सब कब तक चलता रहेगा? मेरा सिंपल क्वेश्चन है इनसे. तो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहे इस देश में, ये आपको मंजूर है, चाहे किसी और की आस्था उसमें हो ना हो? आपका ये प्रश्न है ना कि समझौता हो गया था. विष्णु जैन, आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड टू दैट पॉइंट दैट वाज रेज्ड बोथ बाय बिलाल खान एंड बाय असदुद्दीन ओवैसी. समझौता हो गया था, देयर वाज एन एग्रीमेंट. व्हाई आर यू रेजिंग दिस इन कोर्ट नाउ? एक्सप्लेन दैट एग्रीमेंट एंड व्हाई यू आर चैलेंजिंग दैट, सर. The most important thing, Gaurav, is that if you will ask them what proof you have that this is a mosque, a valid mosque, whether this has been dedicated by Waqf, by Aurangzeb or by any ruler, they will have no answer. If you will ask that what title document you have to say that it's a mosque, they written statement they have filed in the court, Gaurav. The written statement on affidavit filed by them is that this mosque is outside 13. Okay. They are having a defensive approach. No document. हुआ था या नहीं हुआ था? Saying that I am offering namaz here from past so many years, from past 50 years. They have no other claim. Now coming to the compromise. Just a minute. As I explained you, I am again. Sir, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए. और फिर मस्जिद को मंदिर बना दो. यही एजेंडा नैरेटिव चलाते रहोगे देश के अंदर. ये एजेंडा और नैरेटिव की बात कब तक आप कहेंगे कि हिंदुओं को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि न मिले? क्या वो ईदगाह कहीं और शिफ्ट हो सकती है या नहीं? क्या ये प्यार से बातचीत के जरिए सुलझ सकता है मसला या नहीं? और वो जो अग्रीमेंट हुआ था, क्या वो मालिकाना हक जिसके पास था उससे अग्रीमेंट हुआ था या फिर कुछ और लोगों के साथ अग्रीमेंट हुआ था? दीज आर ऑल क्वेश्चंस दैट विल बी डिसाइडेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ.